Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई और MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन बेल आइकन को ये ऑल सेट करदेव तापर वीडियोज क्लारिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज PDF नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे आमे लिनियर वेक्टर स्पेस रो अगेन किछिटा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन डिस्कशन करबा पार्ट 2 सो देखो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 3 रे कहूँ ऑब्टेन अ सेट ऑफ 4 ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स बाय अप्लाइंग द स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन मेथड चार्टा हमको वेक्टर दे देला u1 u2 u3 u4 ऑलरेडी ये टाइप रो प्रॉब्लम हमें प्रीवियस क्लास रे करिछु सो किछि नै सपोज v1 v2 v3 v4 हमें चार्टा ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर कहला ताले एबे हमें याको लिखि परिबा v1 हे गला इक्वल टू u1 v2 हे गला u2 प्लस a21 v1 ओके याको एबे मु शॉर्टकट रे बताउची नेक्स्ट टास्क हला हमको a21 रो वैल्यू बाहर करिवार अछि फॉर व्हिच वी डिटरमाइन द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ओके सो a21 रो वैल्यू देखिबो -1 आसीबो सो v2 जगह रे एठी हमें जो a21 रो वैल्यू एठी पुट कर देला यारो देखो वैल्यूटा आसी गला v2 रो ओके नाउ v3 से भाई आम लिखिपर u3 प्लस a31 v1 प्लस a32 v2 ओके a31 a32 अगेन आम बाहर करवा यार वैल्यू a31 वैल्यू देखो 0 आसो a32 होगला 1 ताले v3 होगला दिस मच ओके एंड फाइनली v4 ओके यहाँ आसला एबे तीन टा कोएफिशिएंट रो वैल्यू बाहर करने को पड़ो चेक कर a41 a42 a43 आसीज 1 0 -1 या को एबे पुट करवा v4 रो जो वैल्यूटा हमें पाइला दिस वन ताले द डिजायर्ड ऑर्थोगोनल सेट इज देयरफॉर हमें लिखि देला v1 v2 v3 v4 ना कॉरेस्पोंडिंग ऑर्थोनॉर्मल सेट याकू लिखिया पई हेले एबे हमें लिखिबा याकू ए हिसाब रे जो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओके सो 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 देन 1 1 0 1 जोटा एठी भी थिला okay similarly x2 x3 x4 okay so note that here in working out this example the final set of orthogonal set of vectors depends on the order of original vectors one may thus arrive at different sets of orthogonal vectors starting from the same set of linearly independent vectors if one takes them in a different order okay so जहाँ भी हो नेक्स्ट प्रॉब्लम को एबे जिबा एग्जांपल नंबर 4 एठी कहूची x y z टू बी linearly independent vectors determine whether x plus y y plus z z plus x are linearly dependent or independent ये वाला प्रॉब्लम भी करूछु हमें प्रीवियस क्लास रे तो फर्स्ट हमको x y z जेतु linearly independent दीची हमें याको लिखि परिबा ax plus by plus cz equal to 0 such that एटा पॉसिबल केते बेले हबो if and only if a b c ए सबुर वैल्यू 0 होतबा कथा ओके नाउ हमको चेक करिवार अछि x plus y y plus z z plus x ओके एटा लिनियर डिपेंडेंट ना इंडिपेंडेंट सपोज हमें लिखिला याको p q r तीनटा अलगा कोएफिशिएंट लगे की टू बी इक्वल टू 0 ओके ताले एबे आमे इन टर्म्स ऑफ x y z याको लिखि परिबा ओके x y z रो टर्म को कॉमन नहीं गला ऑलरेडी हमें देखिला जे एटा होची x y z रो गोटे लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x y z होची लिनियरली इंडिपेंडेंट दैट इज व्हाई p plus r should be equal to 0 p plus q equal to 0 and q plus r equal to 0 from which we get p q r to be equal to 0 so we can say that all the three terms x plus y y plus z and z plus x are linearly independent okay तापर नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 एटा को कहूची जे show that the set of all linearly complex numbers
will form a vector space over the field of real numbers, and what will be the dimension of this vector space. So ଯେତେବେଳେ ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ ଇଏ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛି ଯଦି ପଚାରୁଛି ତାମାନେ यार ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ସପୋଜ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ସେଟ୍ ନେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ସି, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲା ଲିନିୟର ଭେକ୍ଟର ସ୍ପେସ୍ର ପ୍ରପର୍ଟି, ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ଏଡିସନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି। ଓକେ, ୟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବରକୁ ତୁମେ ଲେଖ z ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ ଆଇ ୱାଇ। सो यही हिसाब से या देख लिखाई। ओके, एटा एडिशन प्रॉपर्टी देखिबो पोजेस करूची, तापरे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को पोजेस करिवो। ओके, देन आइडेंटिटी एलिमेंट सहित यार एडिशन करिबा, सो एटा सेम रहिबो। ओके, देन एवरी एलिमेंट पई गोटे यूनिक इनवर्स ये पोजेस करिवो, एंड फाइनली कम्यूटेटिव लॉ एडिशन रो ये आल्सो पोजेस करिवो, सैटिस्फाई करिवो। ओके, so we can say at the end that the complex vector जोटा कि आम देखुला स्पेसटा इट इज नथिंग बट अ वेक्टर स्पेस ओवर द रियल फील्ड आर। तापरे यार डायमेंशन को चेक करिबा, सो डायमेंशन यार हबो 2। केमती, लेट अस चूज टू पार्टिकुलर एलिमेंट्स 1 plus 0i and 0 plus 1i and solve the equation x और y को multiply करिबा, so such that it should be equal to 0 plus 0y. Okay, x और y हेगला रियल नंबर्स। नाउ याको एबे हमें लिखि परिबा x plus 0y plus 0 plus yi, so that x plus I y equal to 0 plus 0y. That means x and y both should be 0. Since the only solution of this equation number 68 is the trivial solution, so this shows that the two vectors 1 plus 0i 0 plus 1i are linearly independent, and further any other vectors a plus ib of the complex vector space C can be expressed as a linear combination of these two vectors in the form like this: a plus ib याको हमें लिखि परिबा a into 1 plus 0i plus b into 0 plus 1i। ओके, सो याको ये जो कोफिशिएंट देखुछु it belongs to the vector field R of the real space. So this shows that the maximum number of linearly independent vectors in this space should be 2, or its dimension should be therefore equal to 2. Okay, अच्छा आको बढ़िबा। Now see, this I have taken from another book. So एठी देखो problem number 20 रे कहूची if a set of n such that it is greater than 1, so a set of n vectors is linearly dependent, then at least one of these n vectors can be expressed as a linear combination of the remaining n minus 1 vectors। याको प्रूव करिबा। तो सपोज आमे गोटे सेट ऑफ n linearly dependent vectors निगला v1 v2 up to vn। okay, and remember n is greater than 1, so this set जेहेतु एटा linearly dependent, so we must have a linear combination of the type k1 v1 plus k2 v2 plus up to kn vn should be equal to 0, where all the scalars k1 k2 and kn are not 0 because linearly dependent. Suppose आमे कहला kr, आमे जानिनु kr randomly आमे कहला it is not equal to 0, then we can write vr यार जो कोफिशिएंट होची, so vr equal to minus of k1 by kr v1 plus k2 by kr v2 plus up to kn by kr vn. So this can be expressed now as vr equal to, suppose हमें या को कहला ए जो रेशियो को k1 डैश ए रेशियो वाला k2 डैश और ए रेशियो kn डैश। ओके, सो हमें एटा को लिखि पारुछु vr को एज ए linear combination of v1 v2 up to vn, so this is proving the proposition. Okay, next problem, show that any set of n vectors containing the null vector is linearly dependent. Again a set of n vectors nela hame, of which suppose vn is a null vector, माने vn हेगला equal to 0, then if the set v1 v2 up to vn minus 1 of n minus 1 vectors is linearly dependent,
then the set of n vectors containing n minus 1 vectors and the null vector will also be linearly dependent, right? So in the case when the set v1 v2 vn minus 1 जोटा कि n minus 1 vector रो एटा जदि linearly independent, okay, then by definition there exists a set of n minus 1 scalars such that k1 k2 up to kn minus 1, all of which being equal to 0 because linearly independent कौची, right? So आमे याकु लिखि परिबा k1 v1 plus k2 v2 up to kn minus 1 vn minus 1 equal to 0, assuming that kn is not equal to 0 and vn equal to 0 जोटा हमको starting रे कहूची एटा null vector. So this relation will still hold in the form, okay, এটা again satisfy करिबो. So we all have the scalars now k1 k2 up to kn which are not 0. Kaiki not 0? Because kn is not equal to 0. So this follows that the set of n vectors v1 v2 up to vn is linearly dependent and thereby proving the proposition. Okay, moving on to the next problem number 22. एटी देखो हमको तीनटा वेक्टर देला r1 r2 r3 in terms of a b and c such that a b c are non-zero and also non-coplanar. प्रूव करबा कहूची r1 r2 r3 are linearly dependent केते बेले हबो if there exists a set of scalar which is k1 k2 k3 and not all 0 such that linear combination टा हिजिबो equal to 0. r1 r2 r3 रो value put करबा and we calculate it further a b c रो जो टर्म अछि ताको कॉमन नै जिबा. ओके, जेतु क्वेश्चन रे कहूची a b c एटा नॉन जीरो, ओके, आ आल्सो नॉन कोप्लानर, तेणु यार कोफिशिएंट गुडा निहाती भाव रे जीरो हबो. याकु लेखिला एंड वी सॉल्व इट फर्दर तीनटा जो रिलेशन पाइला सो दैट आमे एथिरु k1 k2 आ k3 रो वैल्यू पाइ जिबा एज 5 -2 एंड -1. ओके, यार वैल्यू को पुट करिबा जो आमर लिनियर कॉम्बिनेशन थिला r1 r2 r3 सहित ताले r3 रो वैल्यू आमे पाइबा 5 r1 -2 r2. सो जेतु r3 को आमे इन टर्म्स ऑफ r1 r2 लिखि परछु, सो द थ्री वेक्टर्स शुड बी लिनियरली डिपेंडेंट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 23. शो दैट the set of vectors again तीनटा दे देला r1 r2 r3 यार वैल्यू respectively I j k ए हिसाब रे देला. एबे कहूची they are linearly independent हेले again we take three scalars k1 k2 k3 all being now should be equal to 0 और यार linear combination टा again 0 हबो. ओके, सो r1 r2 r3 रो वैल्यू हमें पुट कला तापरे एठी I j आउ k रो टर्म को हमें कॉमन नै जिबा. ओके, अच्छा, जेतु I j k they are being non coplanar, so यार जो कोफिशिएंट गुडा याकू ही हमें इक्वेट करबा को पड़िबो 0 सहित एंड वी सॉल्व इट फर्दर. सो यार वैल्यू देखो इक्वल टू एठी लामडा कर देला तापरे k1 k2 k3 रो वैल्यू इजीली बाहरी जिवो. देखो k1 equal to 0 k2 equal to 0 and k3 will also be equal to 0. so eta prove करला जे the three vectors should be linearly independent. Okay, then next problem number 24. show that the necessary and sufficient condition for the vectors r1 r2 और r3 in terms of x y और z बा x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ए हिसाब दे देला. now the three vectors are to be linearly independent is that the determinant of the coefficient should be different from 0. okay, now the set of given vectors eta linearly independent कहूची केते बेले हबो. again we take three scalars k1 k2 k3 such that all these three scalars k1 k2 k3 should be equal to 0. अच्छा, ताले याको हमें linear combination लिखिबा जदि k1 r1 plus k2 r2 plus k3 r3 then we put the value of r1 r2 and r3 we solve it further I j और k रो टर्म को हमें कॉमन नहीं गला ताले जेहेतु I j k एटा होची नॉन कोप्लानर तेणु आमे यार रेस्पेक्टिव कोफिशिएंट को इक्वेट करबा 0 सहित
अच्छा ये जो तीन टा इक्वेशन पाइला एथिरु हमें एलिमिनेट करबा k1 k2 आउ k3 को सच दैट गोटे डिटरमिनेंट आसीबो x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3 माने गोटे 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0 किंतु जेहेतु ये जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हमको कहूची दे आर linearly independent. That means we have starting ରୁ ଯେମିତି କହିଲା the three scalar should be equal to 0. So এই কেসরে जो equation 1 को ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା here it will not be solvable in the form of equation 2 মানে এটা 0 ହେବ ନାହିଁ. Okay, showing that the given set of vectors will be linearly independent if and only if যদি এই determinant non zero ହେବ because already k1 k2 k3 0 ଅଛି. যদি এটা এই ডিটারমিনেন্টটা যদি নন জিরো হেলা ନାହିଁ মানে ইকুয়াল টু জিরো হেলা তাহলে the scalars will be different from 0. Okay, both केसटा satisfy हेबोनी आइदर स्केलार सबू 0 हेबो किंबा डिटरमिनेंट 0 हेबो एट ए टाइम बोथ को हमें 0 नहीं पारिबा नहीं बिकॉज हमरो सेट होउची linearly independent. Okay, अच्छा now the last problem show that the three function x square x cube and cos x are linearly independent over the interval जोटा कि minus infinity ru infinity भितरे. So again we will take the linear combination in terms of three scalars that is a b c. Okay, so linear combination yaku equate kariba 0 सहित such that x is within minus infinity and infinity. Now since this equation must be satisfied for all finite values of x, suppose आमे put कला x रो value 0 1 और -1. Okay, এই equation 75 रे. So consequently एबे c equal to 0 पाइला a plus b plus c into cos 1 equal to 0 ଆଉ a minus b plus c cos 1 equal to 0. Okay, तीनटा आमे एठी combination पाउछु. So the only solution of the above equation is that ए तीनटा जाको equation satisfy केतेबेले हेबो निहाती भाबरे जेतेबेले a b c ए तीनटार value equal to 0 हेबो showing that the three functions should be linearly independent. Okay, so this is all about some of the problems and solution based on the linear vector space. Thank you.